Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jnanatimanasya Jnanasya Saksvamitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shriyoda Padakalam Shri Gom Vaishnavam Shah Shri Rupam Jagajatam Sakanaragnatam Tam Tam Sajivam Satvaitam Savrutam Pajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivshakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kansna Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhani Sutadevi Panamama Hripriya Vankha Kalpabhisha Kripa Sindhuvisha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavina Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tenamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki. So today we continue with our seminar from Shraddha to Prema. तो आज हम हमारा जो सेमिनार है श्रद्धा से प्रेम तक उसको जारी रखते हैं. So anything you remember from yesterday? तो कल से आप लोग कुछ याद है तो बताना चाहेंगे? Whatever you remember. Yes. Maharaj, you told about Shraddha. What is Shraddha? Shraddha शब्द विश्वास करे, कृष्ण भक्ति करिले, सर्व कर्म कृत हो. Shraddha is the conviction that by doing bhakti, everything can. Yeah, I will attain perfection. That's from Bhagavad Gita. Very good. Hare Krishna Maharaj. Maharaj told about what is the real cause of suffering, and he explained that klesa and subhada. So what is klesa meaning? And you told about the 5 reasons the cause of suffering, that it is coming from first ignorance, then ignorance converted to asmita, then there is the false ego, and it is converted to raga, and then it transferred to dvesa, and dvesa is ultimately opinion, fear of death. Yeah. Very good. That is how the 5 kleshas. We explained this
5 kleshas also in 2 other ways. तो 5 क्लेश कल बताए थे हम, जिसमें कि इसके जो कारण हैं, मूल कारण है अज्ञान, जो पाप अज्ञान से फिर अस्मिता यानी कि मिथ्या अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये 5 तरह की जो परतें हैं, इसी को हमने 2 तरीकों से समझाया था। वो क्या थे बताइए। So you can next slide. So these are these 5 kleshas ये हैं 5 क्लेश that avidya was the root cause of all suffering. अविद्या जो है सारी समस्याओं की जड़ है। That by that we mistake the body as a self. क्योंकि इस अविद्या के प्रभाव से हम शरीर को ही हम स्वयं मान बैठते हैं। And that's called asmita. और उसको कहते हैं अस्मिता। And asmita then manifests itself in I and mine. और अस्मिता फिर स्वयं को अहम, ममेति, मैं और मेरे के रूप में प्रकट करती है। And by this absorption in I and mine, we cause attachment and aversion in this. We develop attachment and aversion. और फिर इस मैं और मेरे के कारण हम राग और द्वेष का निर्माण करते हैं। Attachment, well, because we want to give happiness to the body, sense gratification. और राग या आसक्ति क्यों आती है? क्योंकि हम इस शरीर को सुखी करना चाहते हैं, इसको इंद्रिय तृप्ति प्रदान करना चाहते हैं। And Vaishya, we are averse to what gives trouble to the body और द्वेष and the mind. Yeah. जो शरीर को कष्ट देता है, हम उससे दूर करना चाहते हैं। And the abhinivesha means we have become obsessed with the body, life after life. और अभिनिवेश मतलब हम इस शरीर के साथ आसक्त हैं जन्म जन्मांतर से। And we came to the point when the body dies, we think we will die. और हम उस बिंदु तक हम ये विचार करने लगते हैं कि जैसे ही हम सोचते हैं कि हम शरीर नष्ट होगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। So that's the fear of death. तो ये है मृत्यु का भय है। Now you can go 2 slides further. This one, Maharaja. No, the previous one. Previous one. 5 kleshas. You don't have the last one. This is not the last one that I sent. Yesterday I sent it. Yesterday. I sent that 1 hour ago. I sent him that one. Oh, yes, I have. That you have, na? I sent you that. Shraddha to anarth nivritti. कल नहीं आ ले जाए सुबह। Because this avidya is further explained in Harinam Chintamani. No, it's not this one. Last one, We already put it. Shraddha to anarth nivritti. ये आज जो भेजे थे, हाँ यही तो बोलना है। हाँ ये तो रावण तो रावण नहीं बोलते मेरे को। So in Harinam Chintamani, it says this avidya is compared to clouds. तो हरिनाम चिंतामणि में इस अविद्या की तुलना बादलों से की गई है। Clouds covering the spirit soul. और ये जो बादल हैं ये आत्मा को ढक लेते हैं। That and by this avidya we cannot understand
the true spiritual nature of the holy name of Krishna. अविद्या के कारण कृष्ण के पवित्र नाम का जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव है वो हम नहीं समझ पाते हैं. So that's the first point. तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ये that this avidya prevents us not only that we cannot understand the holy name, but we can also not understand how Krishna is the supreme personality of God. और विद्या का प्रभाव क्या होता है कि हम एक तो ये नहीं समझ पाते कि हरिनाम का स्वभाव क्या है, साथ में ये भी हम नहीं समझ पाते कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. And because we cannot understand Krishna, we cannot understand the transcendental nature of our own self. और चूंकि हम कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं तो हम खुद का भी जो आध्यात्मिक दिव्य स्वभाव है उसे नहीं समझ पाते हैं. We can not understand that we are a part and parcel of Krishna. हम कृष्ण के अंश हैं, ये बात हम नहीं समझ पाते. We think ourselves a part and parcel of this world. That's the problem. हम सोचते हैं कि हम इस जगत का ही कोई अंश हैं, यही समस्या है. And therefore we take shelter of this world which is temporary. और इसी कारण हम इस नाव की शरण ग्रहण करते हैं जो कि क्षणिक है. And because it's temporary, it's illusion to take shelter of something impermanent. और चूंकि ये क्षणिक है तो हम ऐसी क्षणिक वस्तुओं की शरण ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा मोह है या हमारा भ्रम है. So that prevents us to develop sambandha jnana. इस मोह के कारण, अविद्या के कारण हम संबंध ज्ञान को स्थापित नहीं कर पाते. Can someone explain me what sambandha jnana? कोई समझा सकता है कि संबंध ज्ञान क्या है? Yes. To know that who is Lord and who am I and what is the connection between them. It's the knowledge required. Yeah, translate. हाँ, इसका प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारे बीच में संबंध क्या है. ये है संबंध ज्ञान. So that's correct. That is the knowledge required for understanding our relationship with Krishna. तो ये सही है. संबंध ज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे हम समझ सकें भगवान से हमारा क्या संबंध है. Sambandha jnana allows us to re-establish our relationship with Krishna. संबंध ज्ञान से हमें कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलता है. But these avidya are like clouds by which we cannot understand our position. दूसरी ओर अविद्या उन बादलों की तरह है जो आत्मा को ढक लेती है, इस कारण हम समझ नहीं पाते कि हमारी वास्तविक स्थिति है क्या. So that's it, yeah. And therefore, yes, we are under the spell of these 5 kleshas. और इसलिए हम जो है ये 5 क्लेशों के घेरे में हैं. So the next slide. Here these are 5 kleshas. This is explained, I think, in the 2nd canto of the Bhagavatam. Brahma creates 5 layers of ignorance before starting his visarga, secondary creation. तो ये 5 क्लेश यहाँ बताए हैं. इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में भी है कि ब्रह्मा जी ने विसर्ग यानी द्वितीय सृष्टि करने के पूर्व ये 5 परतों का निर्माण किया. And the Sanskrit names are there. We discussed them yesterday. संस्कृत के इनके जो शब्द हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, हमने कल उनकी चर्चा भी की थी. So can someone tell me what tamas means? तो बता सकता है तमस क्या है? Do you remember? Forgetful of Krishna. Forgetting Krishna. कृष्ण को भूल जाना, यही है तमस का अर्थ. And moha? मोह. Yes. Think I am body. Moha means thinking I'm the enjoyer. मोह मतलब ये सोचना कि मैं हूँ भोक्ता. And by that I identify with the body, yes. और इसके कारण हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं. And mahamoha. महामोह
being attached to things. Attached to things, yeah. Consider it for myself. Okay. Everything should be engaged in myself. चीजों के प्रति आसक्त होना और ये सोचना कि सब कुछ को मेरी सेवा में ही लगाना है, ये है महामोह. Yeah, mamo means this is mine for my enjoyment. महामोह मतलब ये मेरा है, ये मेरे भोग के लिए है. So one illusion comes out of the other. तो एक मोह से दूसरा मोह आता जाता है. And then tamisha. What does tamisha mean? उसके बाद तामिश्र का अर्थ Yes. क्या है? By which he suffer in future. He's suffering, yeah. Because Yeah. Because he wanted enjoyment. his attachment to it, enjoyment. Suffering because of attachment for enjoyment. तो जो तामिश्र का अर्थ है, जो भोग करने की जो आसक्ति है, उसके कारण कष्ट जो होता है. And under tamisha, और अंतामिश्र का अर्थ yes, Fear of death. fear of death. That's मृत्यु का भय. same as abhinivation. So that these are the same principles. तो ये भी अभिनिवेश की तरह अंतामिश्र है. ये सिद्धांत वही है जो वहाँ बताए थे 5. And then we explained नेक्स्ट स्लाइड. other 5 kleshas. Next. उसके बाद हमने Next और one. अन्य और 5 Yeah. क्लेशों के बारे में बताया. Here, हाँ. that is a cycle of sinful reactions. ये है पापमय कर्मों की श्रृंखला है. There you have also 5 kleshas. यहाँ पे भी 5 क्लेश हैं. They are called aparabdha, kutam, parabdha, phala, and bijam. इन्हें कहते हैं अप्रारब्ध, कुचम, प्रारब्ध, फल और बीजम. We perform sinful activities and then we get the reaction in stock. The reaction will come later, aparabdha. हम कोई पाप कर्म करते हैं और हमारा जो उसके जो फल है वो हमारे स्टॉक में जमा हो जाते हैं, उसे कहते हैं अप्रारब्ध. मिलेगा वो आगे. And that unmanifested reaction will gradually manifest into other fruits of that. Yeah, it will produce 2 fruits. और जो अप्रकट अवस्था में जो उसका फल है अप्रारब्ध, वो 2 तरह के फल बनाएगा आगे. 2 तरीके से आएगा वो. The parabdha will come, the suffering will come. एक तो अप्रारब्ध से प्रारब्ध आएगा, कष्ट प्राप्त होगा. Because ye samspasyada bhoga dukkayone avate atyantavantakaunti anati ishwaramate buddha. क्योंकि यही संस्पर्शजा होगा दुख योने होते आदि अंतवंत कंदनते शुद्धमते बुधा. So yes, the sages have said that one who wants to enjoy the reaction will be suffering. तो यहाँ पे भगवद गीता में बताया गया है कि जो भोग करना चाहता है उसका अंतिम परिणाम ये होगा, कष्ट मिलेगा. And it's not worthwhile because it's temporary. और वो भोग भी कोई योग्य नहीं है क्योंकि ये तो सब क्षणिक भोग है. So people want to enjoy it, but they have to pay for it. तो लोग चाहते तो हैं भोग करना, लेकिन उसको इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी. Because they are enjoying at the cost of other living entities. क्योंकि वो भोग कर रहे हैं दूसरे जीव के भोग के ऊपर हम भोग कर रहे हैं. Even if you are a vegetarian, if you don't offer your food to Krishna, Krishna says, Shakyasista Sinasanta Munchanse Savakilbisai, and so on. He says you are a stainer, you are a thief. तो यदि हम शाकाहारी भी हैं लेकिन यदि भोग लगाए बिना हम भोजन ग्रहण करते हैं, लोगों की तकादर में बताया गया है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप चोर कहलाएंगे. So you get a full fruit from that reaction then. तो उस कर्म फल का वो पूरा फल भोगना पड़ेगा. But aparadma karma means also that it gives you the desire to do it again, to go again for enjoyment. तो अप्रारब्ध का एक तो प्रारब्ध फल मिल जाएगा, दूसरा ये भी होगा कि आपके अंदर दोबारा उस पाप कर्म को करने की इच्छा का जन्म होगा. And that turns into bija, a very strong desire. और फिर वो जो भावना है वो धीरे धीरे बीजम बदल जाएगी, बहुत तीव्र इच्छा हो जाएगी पाप करने की. And one does it again, it never stops. फिर से पाप कर्म करेंगे और फिर इस तरह व्यक्ति करता रहता है, रुकता नहीं. Okay, that was the recap of yesterday.
ये कल की चर्चा थी, उसको संक्षेप में यहाँ पे बता दिया। Today we will start to speak about the stages of advancement in Bhakti. आज हम भक्ति में जो उन्नति की जो अवस्थाएं हैं उसको चर्चा करेंगे। We discussed already the importance of Shraddha. कल हमने श्रद्धा की महत्व पहले ही चर्चा कर ली थी कल। Shraddha means in the beginning of the process of devotional service, I have faith in the scriptures. श्रद्धा मतलब भक्ति की जो शुरुआत की जो अवस्था है भक्ति की विधि की, तो उसमें हमें शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है। Krishna says, Deinasmin chatati kamaram javanam chahata tadayantara paptritiyastatra namuyati. Your body changes. कृष्ण भगवद्गीता बताते हैं देनो अपने श्लोक में कि आपका शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। And at the end, through all the changes, there is death and you have to leave your body. और अंत में सारे परिवर्तन होने के बाद मृत्यु आती है और आपको आपका शरीर छोड़ के जाना होता है। So Lord Krishna does not say, Arjun, because you are a Hindu, your body changes. तो भगवान कृष्ण अर्जुन ये नहीं कहते कि अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो ना तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है। No, everyone's body changes. नहीं, हर एक का ही बदलता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। It's very scientific. ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। Krishna says in Bhagavad Gita, one who takes birth is sure to die. कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। That's very correct. Nobody can say anything against that. ये तो सभी के लिए है, कोई भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता है या कर सकता है। So one gets hardly some faith in the scriptures. तो इस तरह से हमारा जो है शास्त्रों में विश्वास उत्पन्न होता है, बढ़ता है। And then by hearing the scriptures, sadhu sangha in association of devotees, one develops a desire to practice what's in the scriptures. तब हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, साधु संग में श्रवण करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको जीवन में अपनाया जाए, पालन किया जाए। But then finally, by association of devotees, one get to know how to practice devotional service. और तब आखिरकार भक्तों के संग में जब साधु संग करेंगे तो समझ में आएगा कि भजन क्रिया को कैसे करना है। One takes shelter of a spiritual master and inquires from him about the proper conduct, the proper behavior. तब आध्यात्मिक गुरु की शरण लेके उनसे दीक्षा ग्रहण की जाती है और फिर उनसे जो है सीखते हैं कि सही वैष्णव आचरण क्या है, किस तरह भक्ति का अभ्यास करना है। Then one starts to follow the Guru's instructions. उसके बाद जो शिष्य है वो गुरु के आदेश का पालन करना आरंभ करता है। And one associates with devotees, makes friendship with devotees. मतलब जो भक्त है वो भक्तों का संग करता है और भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करता है। One takes shelter of more realized devotees. उन्नत भक्तों की वो शरण में जाते हैं भक्त। And then one start to engagement in devotional service and practice. और उसके बाद जो भक्त हैं वो भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, भक्ति में सेवा के अभ्यास करने में लग जाते हैं। So one starts to chant, to do practical service and so on. हरि नाम करना और व्यवहारिक जो सेवाएं हैं भक्ति जीवन में वो उसमें संलग्न होता है भक्त। And then साधु संग में this practice of devotion service is called bhajana kriya. तो ये जो भक्ति का जो अभ्यास की जो विधि है इसे कहते हैं भजन क्रिया। And bhajana kriya has two stages. भजन क्रिया की दो अवस्थाएं हैं, Sub stages. यानी कि दो उनकी गौण अवस्थाएं हैं। That is anishtita bhajana kriya and nishtita bhajana kriya. एक है निश्चित भजन क्रिया और दूसरी है अनिश्चित भजन क्रिया। Unsteady performance of devotional service and steady performance of devotional service. अनिश्चित It's anishtita and nishtita. These are the terms. So unsteady
performance of devotional service, anishtita, is of 6 stages which are mentioned here. तो अनिष्ठित जो भजन क्रिया है उसमें 6 अवस्थाएं हैं जो कि यहाँ बताई गई हैं. Once one is going to this, one goes to these stages, not always in sequence, but most of them we will have experienced. तो हम सभी जब भक्ति में जो आते हैं इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हैं. And हो that, सकता है कि ये एक जो ये दिया हुआ है क्रम इस रूप में ना हो, लेकिन ज़्यादातर इसी रूप में होते हैं. and then one becomes steady in devotional और उसके service. बाद निश्चित स्तर पे हम आते हैं. So, once we have steady devotional service, then one must work on the quality of his devotional service. जब हम निश्चित स्तर पे आते हैं तो हम जो हमारी भक्ति में सेवा है उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं उस पर विचार होता है. And avoid all the apparats. और सारे अपराधों को भी दूर करना है, उससे बचना है. And if one can avoid these apparats and these offenses, then anartha-nivritti starts. और यदि कोई इन अपराधों से बच सकते हैं तब अनर्थ निवृत्ति का शुभारंभ होता है. Anartha-nivritti is the purification of the heart. अनर्थ निवृत्ति है हृदय का शुद्धिकरण. It's the removal of this avidya, which is the cause. It is the removal of this avidya, which is the cause of all the kleshas. अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है उस अविद्या को दूर करना जो कि सारे क्लेशों का जड़ है. So it takes a while before you come to this anartha nivritti. तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक आने तक हमको कुछ समय तो लगता ही है. That can take some years. कुछ साल लग सकते हैं. But once you are in anartha nivritti, it goes, your anarthas start to be removed. लेकिन एक बार अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आ जाते हैं तो आपके अनर्थ फिर धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं. So usually this process takes 20, 30, 40, 50 years. साधारणतया इस विधि में 20, 30, 40, 50 साल तक लग जाते हैं. Because the anartha nivritti, the first you have the gross anarthas, which has to be removed. क्योंकि अनर्थ निवृत्ति की जो ये विधि है इसमें पहले हमारे स्थूल अनर्थ हैं, पहले उनको नष्ट होना है. And then the subtle anarthas. उसके बाद जो सूक्ष्म अनर्थ हैं उनका नंबर आता है. What are gross anarthas? स्थूल रूप से जो अनर्थ हमारे हृदय में है वो क्या क्या है? Lust, anger, greed, madness, illusion, envy. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. Yeah. And the subtle is, desire for profit and distinction. और जो सूक्ष्म अनर्थ हैं वो हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की भावना. So we hear from Chaitanya Charitamrita the cleansing of the Gundicha temple. तो चैतन्य चैतामृत से हम पढ़ते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला. First there was all the dust and all the gross things out, that and it took a while. पहले तो जो पत्थर वगैरह हैं, जो बड़े बड़े जो हैं कचरा, उस सबको बाहर फेंका दिया. उसमें कुछ समय लगता है. But then the subtle things, then the deep cleaning, and that takes a while. That's not easy. उसके बाद सूक्ष्म रूप से सफाई का नंबर आता है, जो कि गहराई से सफाई की जाती है, उसमें तो समय लगता है. And when one has completed this process of anartha nivritti, one comes to nishta, liberation. One is liberated. और जब अनर्थ निवृत्ति की अवस्था को भी कोई पार कर लेता है तब वो निष्ठा के स्तर पे आते हैं. निष्ठा मतलब मुक्ति की अवस्था, उस अवस्था में मुक्त हो जाते हैं. That's the madhyamadikar platform. ये है मध्यम अधिकारी का स्तर. Then one does not take birth again. उसके बाद फिर जन्म नहीं होता है. So, I repeat, we have discussed the Shraddha first. तो मैं दोहराता हूँ. पहले है श्रद्धा.
हमारे then sadhu sangha, उसके बाद साधु संग, and then you learn how to practice devotional service, bhajana kriya. उसके बाद आप सीखते हैं कि भक्ति करनी कैसे है, भजन क्रिया। Bhajana kriya has 2 subdivisions. भजन क्रिया के 2 विभाग हैं, Anisthita, unsteady, and nishtita, steady. अनिष्ठिता जो कि पूरी तरह से स्थिर नहीं है, भक्ति में दृढ़ नहीं, और निष्ठित यानी स्थित है। So anisthita is explained here अनिष्ठित को यहाँ पे अब समझाया गया है as 6 substages, which we will discuss now. अनिष्ठित भजन क्रिया के 6 और उपविभाग किए गए हैं, जिनको यहाँ पे आपको बताया जाएगा। If one has surpassed them, one comes to nishtita, bhajana kriya, steady devotional service. अनिष्ठित के इन स्तरों से पार हो जाते हैं तो निष्ठित भजन क्रिया के स्तर पे आते हैं। Then one can go to the next stage, is avoiding offenses in one's practice of devotional service. तो हम अगले स्तर पे कैसे जा सकते हैं, निष्ठित स्तर पे, कि जो 10 नाम अपराध हैं भक्ति में, हमको उनसे दूर रहना है, उनसे बचना है। So it means it's not only nama aparat, seva aparat. We will discuss all them on Monday. तो ये केवल नाम अपराध सेवा अपराध ही नहीं है, और भी हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे सोमवार के दिन। Because this, if we chant without offenses, if the offenses start to stop, we enter namabhas. क्योंकि हम इन अपराधों से मुक्त होकर जब हरिनाम करते हैं तो अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम नाम आभास के स्तर पे आ जाते हैं। So in terms of the chanting of the holy name, namabhas is an arthanivritti. तो हरिनाम के जप में यदि की बात करें तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है नाम आभास के स्तर पे आना। Namabhas means just a reflection of the potency of the holy name you get, and that gives you and that purifies your heart. नाम आभास का अर्थ है कि हरिनाम की जो शक्ति है उसका हमें आभास हो रहा है, उसकी परछाई, उसकी छाया, और उससे जो है हृदय में शुद्धिकरण होता है। So this namabhas chanting is purify the heart. तो इन नाम आभास के स्तर पर जप जो है हृदय को शुद्ध करता है। But it's not because we chant Hare Krishna we are already at namabhas. लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे कृष्णा जब कर रहे हैं तो हम नाम आभास के स्तर पर आ ही गए अभी, नहीं। Now you have to go to the process. आपको विधि से होकर गुजरना पड़ेगा। And this namabhas and this anarthanivritti will purify your heart. तो इन नाम आभास या अनर्थ निवृत्ति आपके हृदय को शुद्ध करेगी। So chanting namabhas purifies the heart. तो नाम आभास का जो कीर्तन है ये हृदय को शुद्ध करते हैं। If the heart is purified, we come to nishtha, the next level after anarthanivritti. तो हृदय शुद्ध हो जाता है तो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो अगला स्तर है वो है निष्ठा का स्तर, उस पर हम आ जाते हैं। And then the heart is practically pure. और अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हृदय लगभग शुद्ध ही है। If you chant the holy name on nishtha, then what will be the effect? यदि निष्ठा के स्तर पे आप हरिनाम का जप करते हैं तो क्या प्रभाव होगा? You will develop love of God. कृष्ण प्रेम आपको उत्पन्न होगा। Then you chant the Suddha Nam, the pure name. तब आप शुद्ध नाम का जप कर रहे हैं, शुद्ध नाम। So that's a general overview that we know where we go. तो ये एक ऊपर से एक सांचा है और एक प्रक्रिया है कि जिसमें से हमको पता चलता है हम कहाँ जाना है हमको। But first we discuss the first stage of bhajana kriya, unsteady devotional पहले हम service. चर्चा करते हैं भजन क्रिया, मतलब अनिष्ठित भजन क्रिया में पहला स्तर। That utsahamai. उसका नाम है उत्साहमयी। You are a few months in the ashram and you think I've understood everything. कुछ महीने हुए आपको आश्रम में और आप सोचते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ समझ लिया है। One has already become a great scholar. हाँ? One thinks himself already a great scholar. कोई सोचता है कि मैं अभी महान विद्वान बन चुका हूँ। But he thinks, but he's just starting the process of devotional service. लेकिन वो तो अभी भक्ति की विधि को शुरू ही किए हैं अभी। But one is very enthusiastic.
लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा है। It's not bad. ये अच्छे बुरा नहीं है। That, but then, yeah, studied Bhagavad Gita, and some things one understands and some things not. लेकिन फिर उसके बाद जो भक्त नया भक्त है वो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं। Yeah, sometimes one is diligently studying, and sometimes, yeah, I don't understand it, so one gives it up for some time. कभी कभी वो बहुत ही गहराई से अध्ययन करता है, फिर कभी सोचता है अरे समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देता है, कभी थोड़ी देर थोड़े समय के लिए। So because of lack of taste, sometimes one becomes completely negligent, stops the study for some time. रुचि का अभाव होता है तो कभी कभी व्यक्ति पूरा उपेक्षा कर देता है, शास्त्र अध्ययन को त्याग ही देता है कुछ समय के लिए। Sometimes he comes to the temple to do some service, but sometimes he's not coming, he does not service. कभी कभी मंदिर आते हैं सेवा करने के लिए, कभी कभी मंदिर आते ही नहीं है सेवा करने के लिए। Sometimes practicing, sometimes not. कभी भक्ति में सेवा का अभ्यास कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। Sometimes very enthusiastic and then forget it for a few days. कभी कभी एकदम बहुत उत्साह आ जाता है, फिर कभी कुछ दिनों के लिए बस भूल जाते हैं सब। Taskana Tarala. इस अवस्था को बोलते हैं दूसरी अवस्था घन तरल। I think most of us have surpassed this, hopefully. मैं सोचता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस अवस्था को पार कर लिया है। But then one comes into the stage of Vyuda Vikalpa. और उसके बाद लेकिन उसके बाद अगली अवस्था पे आते हैं भक्त, वो है व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प, His mind is going from one thing to another. उसका मन एक अवस्था दूसरी अवस्था पे जा रहा है। One day one thinks, yeah, I should just marry in Krishna consciousness and raise Krishna conscious children. कभी कभी वो सोचता है कि चलो अब कृष्ण भावनामृत में ही मैं शादी कर लेता हूँ और कृष्ण भावनामृत बच्चे उत्पन्न करके उनको बड़ा करता हूँ। And the next day the devotee thinks, better I go to Vrindavan, give up that idea. I go to Vrindavan and chant 64 rounds, give everything up. अगले दिन वो भक्त सोचता है अच्छा तो इससे अच्छा ये है कि वृंदावन ही चला जाता हूँ, वहाँ सब कुछ त्याग करके 64 माला हरिनाम जप करेंगे। Then I will be able to chant without distraction. तब ऐसा करूँगा तो बिना किसी विरोध के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन विचलन के हरिनाम कर पाऊँगा। Oh no, maybe I will wait for that. I will do that in old age. और सोचता है नहीं थोड़ा इंतजार करते हैं, बुढ़ापे में वो सब करेंगे। That I first will enjoy until I realize that really this world is a world full of suffering. चलो पहले मैं भोग कर लेता हूँ जब तक कि मुझे ये अनुभव ना हो जाए कि ये जगत कष्टपूर्ण है। Then he thinks again, no, it's better to renounce now everything, give it up. फिर सोचता है नहीं अभी सब कुछ त्याग देना अच्छा है, छोड़ देते हैं सब कुछ। That, or should I see family life as a deep well of sense gratification? Yes, ma'am. Or should I see family life as a deep well of sense gratification? और फिर सोचता है वो पारिवारिक जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति का गहरा कुआं है। This is not a reliable shelter, I'll give it up. ये सही जगह नहीं जाने के लिए, उसको छोड़ देना पड़ेगा। Or should I wait until my parents are died and then go to live in the temple? और फिर कभी सोचता है कि इंतजार करता रहूं जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा कर लूं, उसके फिर बाद जाऊंगा मंदिर ज्वाइन करूंगा। कभी इस तरह सोचता है। But if I give up my family life immaturely, I will think that then when I renounce, I will think of family life. यदि लेकिन अभी अगर छोड़ दूंगा परिपक्व अवस्था में गृहस्थ जीवन को, घर परिवार को, तो फिर आश्रम में रहूंगा तो भी घर का ही चिंतन करता रहूंगा। फिर If I'm in that condition, I will go to hell if I die. यदि ऐसी अवस्था में मर गया तो फिर नरक में चला जाऊंगा। That's not a good renunciation. ये वैराग्य पक्का सच्चा नहीं है। Therefore,
for the moment I will just keep my body alive. तो अभी इसलिए वर्तमान अवस्था में मेरे शरीर को मैं कायम रखूं, जिंदा रहूं. And later, after gratifying these senses, I will go to Vrindavan. और फिर इंद्रिय तृप्ति वगैरह करने के बाद फिर वृंदावन में जाऊंगा. And worship the Lord. वहीं भगवान की फिर सेवा करूंगा. So, anyway, it's going from one side to another, the mind. Undecision, vyuta, vikalpa. ठीक है, इस तरह वो मन के स्तर पे एक दिशा दूसरी दिशा में भ्रमण करता रहता है. इसे कहते हैं व्यूढ़ विकल्प. And one meditates on all kinds of devotional service, and he cannot decide what to do. तो वो सारे प्रकार की भक्ति में सेवा में विचार करता है, निर्णय नहीं कर पाता है क्या करें क्या ना करें ऐसा. So that's indecision. तो इससे अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. And then you have Visaya Sangara. उसके बाद अवस्था आती है विषय संगार. That's a fight with the senses. इंद्रियों with के साथ controlling the senses. संघर्ष, इंद्रिय नियंत्रण करने में संघर्ष. So one cannot be steady in his sadhana because he's so attached to material enjoyment. साधना में वो स्थिर नहीं हो पाते हैं क्योंकि भौतिक भोग के प्रति इतनी आसक्ति है. And one thinks, yes, tomorrow I get up at 3 o'clock before Mangal Aarti. वो सोचते हैं कि कल सुबह 3 बजे उठूंगा मंगला आरती के पहले. And chant most of my rounds before Mangal Aarti. और ज़्यादातर माला मंगला आरती के पहले ही कर लेंगे अपन. And it happens the first day. पहले दिन हो भी जाता है ऐसा. But the next day, he gets up and his mind says it's too early. He closes his. Let's go back to rest for 5 minutes more. तो अगले दिन सुबह उठता है फिर मन बोलता है नहीं बहुत जल्दी है अभी बस 5 मिनट और आराम कर लेते हैं. But then it becomes just in time for Mangal Aarti. लेकिन उसके बाद बस मंगल आरती के समय पे ही पहुंचता है इसलिए. But the next day it happens again and one misses Mangal Aarti. अगले दिन फिर ऐसा ही आता है फिर उस दिन मंगल आरती मिस भी हो जाती है. Or one thinks, yes, tomorrow is Ekadashi, I will go for a full fast. या फिर व्यक्ति सोचता है कि चलो कल एकादशी है कल पूरा निर्जला एकादशी करेंगे. So it gets up in the morning with the dedication, I will fully fast. पूरा सुबह उठते हैं समर्पित भाव में कि आज पूरा व्रत करना है अपने को. Yes, I'm fully fasting. In 23 hours I can eat. पूरा व्रत पक्का करेंगे. In 23 hours from now I will can eat. Then 10 minutes later something, yes, full fast. In 22 hours and 50 minutes I can eat. फिर उसका फिर विचार 10 मिनट सोचता है 22 घंटे 50 मिनट के बाद फिर मैं खाना खा सकता हूँ. So instead of thinking of Krishna, one thinks about eating the whole day. कृष्ण का चिंतन की जगह खाने का चिंतन चल रहा है. And one ends up eating more than normal. और साधारणतः से ज़्यादा खाना ही खा लेते हैं. So that's a fight with the senses. तो ये है इंद्रियों के साथ संघर्ष है विषय संघार. That it's a battle against one's sense pleasure. तो इंद्रियों की जो प्रसन्नता है उसके विरुद्ध जीव का संघर्ष चलता रहता है. And then niyama akshama. उसके बाद अगली अवस्था है नियम अक्षमा. So today I will chant so many rounds japa. आज वो सोचता है कि आज मैं इतने माला जप करूंगा. And I will pay so many obeisances. और इतना वैष्णवों को प्रणाम करूंगा. And I will render service to the devotees. और भक्तों की मैं सेवा करूंगा. I will not talk about anything than Krishna. कृष्ण को छोड़ के कोई और बातचीत करूंगा ही नहीं. I will give up the association of those who are speaking about material desires. जो भौतिक भोग या इच्छाओं के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं उनका संग में त्याग दूंगा. But although he tries it
he never succeeds in executing it. तो हालांकि भक्त तो ये सब विचार करके इन नियमों का पालन करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी इसमें सफल नहीं हो पाते. So this inability to follow all these rules and these vows is called niyama akshama. तो इन नियमों या इन व्रतों का पालन करने में जो अक्षमता है, जो अयोग्यता आ जाती है, उसे कहते हैं नियम अक्षम. So Visaya Sanghara, the previous one, is the inability to give up material activities. I cannot give it up, this sense तो gratification. पिछला जो है विषय संगारा, उसका अर्थ है कि जो भौतिक कार्य हैं या इंद्रिय तृप्ति जो है, उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं. But niyama akshana is inability to improve one's devotional activities. लेकिन नियम अक्षम का अर्थ है कि जो हमारे भक्ति में जो कार्य हैं, उनमें सुधार करने की अक्षमता. Abhay Prabhu said once, I made a vow at the beginning of Kartik. प्रभु ने कहा कि मैं कार्तिक व्रत की शुरुआत में मैंने व्रत लिया था. During this month of Kartik, I will not criticize anyone. कि इस कार्तिक के महीने में किसी की भी निंदा नहीं करूंगा. This vow lasted for 3 hours. ये व्रत 3 घंटे तक ही चल पाया. Very difficult to do. ऐसा करना बहुत कठिन है. Anyway, but ठीक है. that's of course at another level. That's at another level. एक अलग स्तर की बात है. But we should not make vows we cannot do. We should be realistic according to our ability. तो हमें उस तरह व्रत लेना चाहिए जो कि हमारी वर्तमान स्थिति के अनुकूल हो. So, and then finally, Taranga Rangini, the one becomes steady in his devotional service, and by the qualities one develops, one attracts people's attention. When people come attracted to you. तो उसके बाद आती है अवस्था तरंग रंगिनी, जिसमें कि व्यक्ति भक्ति में निश्चित स्तर पे थोड़ा आ जाता है भक्त, और उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास होता है जिससे कि दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ. So people give you donations and worship you. तो लोग आपको फिर दान देते हैं, आपकी पूजा वगैरह करते हैं, सम्मान देते हैं. But if one thinks, yes, oh, I made it. लेकिन उस अवस्था में कोई भक्त हो जाए कि बस सफलता प्राप्त हो गई भक्ति. These are strong weeds growing in the heart. तो ये क्या है? ये एक तरह से हृदय में भक्ति लता बीज की जगह खरपतवार बढ़ रही है. That one thinks the material success one has because of bhakti, that's my success. जब कोई ऐसा सोचने लगता है कि भक्ति के कारण जब भौतिक सफलता मिल रही है, इसका मतलब भक्ति सफल हो रही है. So that is Taranga Rangini. ये गलत है और इस अवस्था को कहते हैं तरंग रंगिनी. So then, of course, these are 6 stages. It's not that we have to go to all them in that sequence. तो ये जो हैं 6 अवस्थाएं हैं अनिष्ट भजन क्रिया में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एक के बाद दूसरा क्रम से इन अवस्थाओं से हम गुजरेंगे. But I'm sure all of you have experienced some of them. लेकिन मैं निश्चित हूँ कि आप में से सभी ने कुछ न कुछ अवस्थाओं को अनुभव किया ही है. Is that true? सही है? Yeah. Okay. So, and then after that, one becomes nishtita, steady. इस अवस्था के बाद आता है निष्ठित भजन क्रिया. But that does not mean that one has already entered anartha nivritti. निष्ठित भजन क्रिया का अर्थ ये नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति हो गई हमारी. Anartha nivritti means that anarthas, the unwanted things in the heart, must be removed. अनर्थ निवृत्ति का अर्थ ये है कि हृदय में जो अवांछित चीजें हैं वो सब दूर हो जाएं. To enter this anartha nivritti now, we first will try to understand what are anarthas. अनर्थ निवृत्ति अवस्था को पार करने के लिए पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अनर्थ होते क्या हैं, अनर्थ हैं क्या. So, it's difficult to read there. I can read. I can read from Yeah, can read them.
anarthas arising from previous sinful activities. Second, अनर्थों के प्रकार बताए जा रहे हैं। अनर्थ हैं जो पिछले पाप कर्मों से जो उत्पन्न अनर्थ है, एक प्रकार। second anartha arising from previous pious activity. दूसरे अनर्थ हैं जो पिछले पुण्य कर्मों से उत्पन्न होते हैं। Third, anartha arising from imperfectly performed bhakti. इसके पहले वाला पढ़ो ना पहले। Third, anartha arising from offenses against devotional service. तीसरा है वो अनर्थ जो भक्तियों से हम अपराध करते हैं, उनसे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। And fourth is anarthas arising from imperfectly performed bhakti. चौथे हैं अनर्थ, वो अनर्थ जो भक्ति में सेवा को ठीक से नहीं करते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। So first, these are 4 kinds of anarthas. तो पहले तो बात यह है कि अनर्थ 4 प्रकार का अनर्थ, Anarthas which has been analyzed by Srila Vishwanatharya Bhakti Thakur in later division. इन अनर्थों का विश्लेषण श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने किया है माधुर्य कादम्बिनी में। And these anarthas are obstructions, obstacles to bhakti. और ये अनर्थ भक्ति के मार्ग में अवरोध हैं। But the first kind are obstructions to bhakti arising from sinful activities. तो प्रथम प्रकार के जो अनर्थ हैं या अवरोध हैं भक्ति के मार्ग में, वो होते हैं जो पिछले जन्मों के पापमय कर्मों के आधार पर होते हैं। And what are these anarthas arising from sinful activities? तो ये अनर्थ होते हैं जो, नेक्स्ट स्लाइड करो, पाप कर्मों के आधार पर होते हैं, पिछले जन्म के पाप कर्म या पहले जो पाप कर्म किए उनके आधार पर। So they are avidya, asmiti, raga, dvesha and abhinivesha. ये हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। Do you recognize them? पहचान लिया आपने पहले? These are the 5 kinds of ignorance we have discussed. ये 5 प्रकार के जो अज्ञान है उसकी हमने चर्चा की है इनकी पहले। And they are the cause of our suffering. ये हमारे क्लेशों के कारण हैं। If they are removed from our heart, you identify with your spiritual self, your eternal self, and there is no suffering anymore. यदि आप इनसे मुक्त हो जाते हैं तो आप अपनी पहचान फिर आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी आत्मा से ही करते हैं और फिर कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। So when Srila Prabhupada was in Vrindavan in 1977, जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, 1977 की बात है, in July, August of that year, he became very sick. जुलाई अगस्त का महीना था, उस समय बहुत बीमार थे श्रील प्रभुपाद जी। And Guru Maharaj took care of him. गुरु महाराज ने उनकी देखभाल की। But then by the end of August, he became a little better. लेकिन अगस्त के अंत तक श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा उनका स्वास्थ्य सुधर गया था। He decided to go to America. श्रील प्रभुपाद ने निश्चय किया कि चलो अमेरिका चला जाए। Although the doctors advised him not to do. हालांकि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि आप मत जाइए अमेरिका अभी। But still, he had first a flight from Delhi to London. लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी की पहले फ्लाइट थी दिल्ली से लंदन तक। And he stayed first before going to America at the Bhaktivedanta Manor. तो अमेरिका जाने के पहले श्री प्रभुपाद भक्तिवेदांत मैनर में रुके थे। But when he arrived in London, he became very sick again. लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर बहुत बीमार पड़ गए। And the whole day he was in bed. सारा दिन बिस्तर में थे। You can see these pictures where they bring Prabhupada down in a palanquin with these great glasses looking at the deities. आपने देखा होंगे उस फोटो जब श्रील प्रभुपाद को वो लोग पालकी में लेके आ रहे हैं और ऐसे चश्मे में हैं, सीधे विग्रह पर देख रहे हैं प्रभुपाद। Was his last visit to the manor. ये आखिरी इनकी यात्रा थी भक्तिवेदांत मैनर की तरफ। But while he was in bed the whole day. लेकिन जब श्रील प्रभुपाद बिस्तर में थे पूरा दिन, and the devotee was taking care of Prabhupada. तो जो भक्त प्रभुपाद की देखभाल या उनकी सेवा कर रहे थे,
And he asked Prabhupada, Prabhupada, are you suffering? उस भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप कष्ट में हैं, कष्ट भोग रहे हैं? And he replied, I don't feel anything. तो प्रभुपाद जी बताया, नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं होता है। So that's liberated. ये है मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था। He was free from this, all these anarthas. श्रील प्रभुपाद इन सारे अनर्थों से बिल्कुल मुक्त थे And he was in pure consciousness. और शुद्ध चेतना में स्थित थे। So, it is anartha nivritti is Krishna purifying our heart because we have the appropriate attitude in chanting, in performing devotional service. तो कृष्ण जो है हमारे हृदय से अनर्थों को दूर करते हैं और इस प्रकार हम एक सही अवस्था में आते हैं जहाँ भक्ति कर पाए। This morning, someone of, because I give every week lectures for the Ukraine, I got a question of a devotee. तो हर हफ्ते में यूक्रेन में भक्तों को प्रवचन करता हूँ, तो भक्तों से प्रश्न आया, What does it mean, mercy, getting mercy of Krishna? कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अर्थ क्या है? That, so what does it mean? क्या अर्थ है, आप बताइए, कृष्ण की कृपा मिलने का अर्थ क्या है, तो बताएंगे। And I quoted one verse of Bhagavad Gita. तो फिर मैंने भगवत गीता का एक श्लोक वहाँ पे उनको बताया, Tesham emphanakampartam amma jnana jamtama nasa jamatma bhavastu jnanati penna vashvata. So Krishna says, out of my mercy, कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा के द्वारा, he speaks about his mercy, out of my mercy. कृष्ण वहाँ कहते हैं कि मेरी कृपा के द्वारा, From within the heart, हृदय के भीतर से मैं I cleanse the heart of my devotees of avidya. मेरे भक्त के हृदय को अविद्या से दूर कर देता हूँ। That with the jnana dipana, with the torch of knowledge, कैसे करता हूँ? ज्ञान दीपेन, ज्ञान के प्रकाश से। so Krishna gives us realization from within the heart, tadami buddhi yogamtam. तो कृष्ण हमें साक्षात्कार देते हैं हृदय के भीतर से। That's mercy. यही तो है कृपा। Krishna purifying us. कृष्ण हमको शुद्ध करते हैं, शुद्ध कर रहे हैं। Once you are in pure consciousness, you are liberated. जब एक बार आप चेतना शुद्ध स्तर पे आपकी है, तो आप मुक्त अवस्था में हैं। No need to go to the spiritual world. You are already liberated, wherever you are. आध्यात्मिक जगत में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप जहाँ भी अवस्था में हैं, वहाँ मुक्त अवस्था है। And then we can express our love fully for Krishna in ecstasy. उस समय हम आनंदमय अवस्था में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। So that is mercy. ये है कृपा, To get rid of all this avidya. ये सारी अविद्या से मुक्त होना। Because asmita, raga, dvesha and abhinivesha are just further developments of this illusion caused by avidya. हाँ, देखिए, ये राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, ये सब जो अविद्या है उसका ही आगे विस्तार है। It works directly at the root cause. तो यदि अविद्या नष्ट हो गई तो ये सब भी नष्ट हो जाएंगे। So this is the introduction to the anarthas. तो ये अनर्थों का एक भूमिका हमने बताई And how to overcome them. है, And how to overcome them. और कैसे उनसे हम पार पा सकते हैं। And we will discuss them on Monday. और आगे हम सोमवार को चर्चा करेंगे बाकी जो अनर्थ हैं। Any question, comments? कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है किसी की? महाराज कोई प्रश्न? Yes, please. For enlightening us. My question is, from last few years we are practicing Krishna consciousness, and the realization is that still the offense, committing offenses tendency, that is not going. So how can we expect when it will happen, and when we will come to the Nishtita
that steady devotional service level. Yeah. Yeah. महाराज महाराज हमें आपने ज्ञान प्रदान किया, प्रकाशित किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और पिछले कुछ वर्षों से हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो बनी हुई है हृदय में। तो कृपया बताएंगे कि हम कभी इस अवस्था से मुक्त हो पाएंगे, क्या करें ताकि फिर उसके बाद निश्चित भजन क्रिया के स्तर पे हम आ पाएं। If you perform devotional service, what are your expectations? जब आप भक्ति में सेवा कर रहे हैं तो आप क्या आशा करते हैं उसको करते हुए? क्या चाहते हैं? Ultimately to please Krishna and Guru. आखिरकार हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, यही हमारी इच्छा है। That this process of anartha nivritti that takes a while. अनर्थ निवृत्ति की जो ये विधि है इसमें कुछ समय लगता ही है। And my personal experience is that the greatest obstacle are our expectations. और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि सबसे बड़ा जो अवरोध आता है वो है हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं या व्यक्तिगत हमारी इच्छाएं। These expectations are material desires. ये इच्छाएं मतलब भौतिक इच्छाएं। These expectations are not real. ये वास्तविक इच्छाएं वास्तविक नहीं है, ये भौतिक इच्छाएं। That Queen Kunti says at every moment there is danger in this world. कुंती महारानी कह रही हैं कि इस जगत में हर क्षण खतरा है। That people try to build something up in this life and it can be destroyed at every moment. People try to. So yeah, people try to build, to construct their nice future, but every moment, even if they are successful, it's destroyed can be destroyed at every moment, and it will be destroyed. तो लोग प्रयास करते हैं कि अपना भविष्य बहुत ही अच्छा बनाया जाए, लेकिन किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। So what's helpful in the beginning is that one derives satisfaction from the service itself. तो शुरू में क्या अच्छा है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसी में हम संतुष्ट रहें। If you feel not satisfied in what you are doing, you cannot continue doing it. जिस सेवा में आप संतुष्ट नहीं है करते हुए, तो उसको आप कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। Srila Prabhupada speaks about that in the purport of 10.9 Bhagavad Gita. श्रील प्रभुपाद इसके बारे में भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में चर्चा करते हैं। So in the higher realm of devotional service, one feels ecstasy. But in the beginning of devotional service, one must derive satisfaction from the service itself. भक्ति की जो उच्चतर अवस्था है उसमें भक्त को आनंद का अनुभव होता है, लेकिन जब भक्ति की शुरुआती अवस्था में है तो सेवा के माध्यम जो सेवा करना है उसी में ही संतुष्टि का अनुभव करना है। So the question is how to do that. तो प्रश्न अगला ये आएगा कि कैसा करें, कैसे अपन? We can do that by the practice of pure devotional service. हम उसे कर सकते हैं जो शुद्ध भक्ति में सेवा का अभ्यास करें। Although the heart may not be pure, still you can practice pure devotional service. हो सकता है कि हृदय भले ही शुद्ध ना हो, फिर भी आप शुद्ध भक्ति में सेवा का अभ्यास तो कर सकते हैं। And when you perform pure devotional service, you will feel satisfied in what you do. जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसमें संतुष्टि का अनुभव करेंगे ही। Iya yasyare dasye karmanamana sakrin nikalash apavashya jivan mukta sauchate. The liberated soul is one, or one who acts on the liberated platform. मुक्त आत्मा वो है जो
मुक्त स्तर पे ही जो है कार्य करते हैं। is one who uses one's intelligence, one's convictions, one's mind, words and intelligence in the service of Krishna continuously. उस समय वो जीवात्मा स्वतंत्र रूप से अपना मन, अपनी बुद्धि, वाणी और सभी कार्यों से भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है। Become absorbed so in the service and forget about yourself. इतना सेवा में मग्न हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं वो मुक्त अवस्था में। And that will give you satisfaction, that absorption. उस अवस्था में, उस सेवा से आपको जो है संतुष्टि और मग्नता प्राप्त होगी। Not only that will bring you to anartha nivritti. इतना ही नहीं, उससे आप अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे आ जाएंगे। So that's an art we have to learn. तो ये कला है जिसको हमें सीखना है। Purification of the heart is done by Krishna, by His mercy. हृदय का शुद्धिकरण तो कृष्ण की कृपा से ही होगा। But by trying to practice the Vaidhi sadhana bhakti under the instruction of the spiritual master, Krishna is pleased. लेकिन जब हम गुरु के आदेश पे वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं उसे देख के। So we should see ourselves always as an assistant of our spiritual master. तो हमें हमेशा खुद को अपने आध्यात्मिक गुरु के असिस्टेंट के रूप में हमको देखना है। And then we will feel satisfied. तब हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। And we will be able to continue. और हम आगे बढ़ते रहेंगे। It will be very, very valuable for our making progress. तो हम जो है जो उन्नति करना है उस मार्ग पे हम चल पाएंगे। Yeah. Please. Just a clarification, the point you said you have to derive the satisfaction from the devotional service itself. My question was, even if I'm trying to become assistant of the authority or the spiritual master and rendering service, but still when the result is negative, I feel disturbed. So whether I should consider that I am not performing pure devotional service? तो एक और महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज आपने कहा कि हमें सेवा जो है उससे संतुष्ट रहना है। Can you give an example of the results that you observe? Let's say, Maharaj, we are trying to put some preaching efforts somewhere, and the result doesn't come out the way we are expecting. So we feel little disturbed that we can put the efforts, but like we are not getting that result. तो जिसे हम सेवा करते हैं संतुष्ट रहें लेकिन वो फल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। महाराज पूछे कोई एग्जांपल दे सकते हो कैसे निराश हो जाते हो आप? तो उन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम हम जो सोचते हैं वैसा नहीं आता है तो हम निराश हो जाते हैं। Devotional service is not meant to get you material, to give you material satisfaction. भक्ति में सेवा इसलिए बनी नहीं है कि आपको भौतिक संतुष्टि प्रदान करे। The mind is a material element. मन जो है वो भौतिक तत्व है। It's not to feel good that we are practicing devotional service. ऐसा नहीं कि अच्छा अनुभव हो रहा है इसका मतलब हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं। Whether your mind feels good or bad, it doesn't matter. The point is Krishna pleased? मन खुश है या बुरा फील कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से या नहीं होते हैं। And if Krishna is pleased, we feel satisfied. और यदि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपको संतुष्टि का अनुभव satisfied in the heart, in the soul. संतुष्टि हृदय में अनुभव होगा, आत्मा को संतुष्टि का अनुभव होगा। That finally the chanting, the practice of devotional service is a treatment of the mad mind. अंततः जो हरिनाम है और जो भक्तिमय सेवा का जो अभ्यास है यही जो है उन्मत्त मन का उपचार है। But once you stop devotional service, the mad mind is there again.
एक बार जब भक्ति में सेवा बंद कर देंगे तो जो उन्मत्त मन है वो तो उन्मत्त ही है। Therefore, it should be practiced continuously. इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना है भक्ति में सेवा। That it's not you chant your rounds and then I'm finished. Now you have to continue fixing your mind on Krishna. ऐसा नहीं कि हमने 16 माला हो गया उसके बाद जो चाहे तो करें, नहीं, निरंतर आपको अभ्यास करना है, कृष्ण में मन केंद्रित करना चाहिए। If you don't engage your mind in devotional service, the mind will engage you in his service and tell you it's not good, I don't feel good. So why are you doing that? यदि आप मन को भक्ति सेवा में नियुक्त नहीं करोगे तो मन आपको फिर जो है अपनी सेवा में लगाएगा और आपको ये एहसास कराएगा कि अरे भक्ति में सेवा क्यों लगे हुए हो, ये तो इतने अच्छा कोई फायदा नहीं है इसमें। ऐसा An impure mind is our enemy, Krishna says. अशुद्ध मन हमारा शत्रु है। Don't believe the mind. मन पे विश्वास मत कीजिए। Engage your mind always. हमेशा मन को आप लगा के रखिए भक्ति में। It's not that I chant Hare Krishna and then I want to after chanting I look in my mind, how do I feel? ऐसा नहीं कि हमने हरे कृष्णा का जप किया और माला पूरी हुई फिर हम सोचे हाँ मेरे मन अभी तो मैं कैसा अनुभव हो रहा है। The mind is the channel to which you get your suffering and the body conception of life. It's all coming to the mind. So what will your mind tell you? मन एक माध्यम है जिसके माध्यम से सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। जो आपको मन बोलता है आप उस तरह अनुभव करते हैं। Unless you finish anartha nivritti, your mind is your enemy. जब तक अनर्थ निवृत्ति की अवस्था आपने पार ना कर ली हो तब तक मन आपका शत्रु है। If not engaged in devotional service. यदि उसको आप भक्ति में सेवा में नहीं लगाएंगे तो something to be very careful with. तो ये ऐसी चीज का बहुत सावधान होकर रहना That होगा। don't take the mind so serious. तो मन को आप बहुत गंभीरता से मत लीजिए, मन को इतना It's मन की not, बातों को। this body and all this world is not so serious. This body and this entire world is not a serious thing. ये शरीर और ये पूरा जो जगत है ये कोई मतलब बहुत ही गंभीरता से इसको लेने का ये चीज़ नहीं है। Soon you are out of here. बहुत जल्दी आप यहाँ से निकल जाएंगे। Free bowl. So let everything go. Good. We will stop here and we look forward to see you to continue on Monday. He had one question. Can you take that? Okay, my last question maybe. Yeah. Man, the question is regarding last class. You mentioned the topic that bhakti does not depend on purity. So I just wanted a clarification that when we are preaching to new people, it's very much suggested to us that we should be very much pure, otherwise they will not become devotees. So how do we reconcile both of these concepts? Yeah. महाराज आपने बताया कि भक्ति कल बताया था कल परसों में कि भक्ति शुद्धता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन हम जब प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि आपको शुद्ध होना है, आप शुद्ध हो गए तो सामने वाला भी शुद्ध भाव से उस भक्ति को ग्रहण कर पाएगा। तो लेकिन आपने कहा भक्ति शुद्धता पर निर्भर नहीं करती, तो हम कैसे इन दोनों बातों को समझें? For preaching you need purity. प्रचार करने के लिए तो आपको शुद्धता की आवश्यकता है। If you don't have purity for preaching, you can distribute books. यदि शुद्धता नहीं है प्रचार करने की तो किताब वितरण कीजिए। But for the practice of bhakti, no purity is needed. लेकिन भक्ति अभ्यास करने के लिए शुद्धता की इतनी आवश्यकता नहीं है। You can be full of material desires. हो सकता है भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं आप, And you chant Hare Krishna. फिर भी हमारे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। Krishna will fulfill your material desires and take them away. कृष्ण की भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे और उससे आपको मुक्त कर देंगे। Only Krishna can do that. कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। But for the beginning, for starting chanting Hare Krishna, in the beginning, no purity is needed. शुरू में हरिनाम करने के लिए कोई शुद्धता की आवश्यकता थोड़ी है। Then one goes to the process and will become purified. The process we are discussing. और उसके बाद फिर जब विधि से हम गुजरते जाएंगे शुद्ध होते चले जाएंगे, वही विधि जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Shantara Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Guru Maharaj ki, Hare Krishna.
His Holiness Bhakti Prabhupada Maharaja ki, Prabhupada ki, Bhakti Gaur Bhaktivinoda ki.